वन लाइनर्स। 1. विटामिन B12 की खोज किसने की? Who discovered vitamin? आंसर, हॉपकिंस। 2. सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। Name the types of chromosomes based on the position of the centromere. Answer, metacentric, submetacentric, acrocentric, and telocentric. Lophocentric is not a valid type. 3. ग्रुप 16 और ग्रुप 15 के तत्वों को क्या कहा जाता है? What are the elements of group 16 and group 15 called? Answer, group 16 chalcogens, group 15 nictogens. 4. परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? What is the atomic number equal to? Answer, equal to the number of electrons or protons in an atom. 5. अनुच्छेद 132, 133 और 134 किससे संबंधित हैं? What are articles 132, 133 and 134 related to? Answer, Article 132 Constitutional Matters, Judicial Review, Article 133 Civil Matters, Article 134 Criminal Matters. 6. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? What is the difference between repo rate and reverse repo rate? Answer, repo rate RBI lends money to banks, reverse repo rate RBI absorbs liquidity from banks against government securities. 7. SLR और CRR क्या हैं? What are SLR and CRR? Answer, SLR statutory liquidity ratio, minimum percentage of deposits banks must maintain in liquid assets. CRR cash reserve ratio, minimum cash banks must keep with RBI. 8. PSU से प्राप्त विनिवेश राशि किस कोष में जाती है? In which fund do the disinvestment proceeds from PSUs go? Answer, National Investment Fund created in 2005. 9. प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की और इससे कौन मुख्यतः जुड़े थे? When and by whom was the प्रार्थना समाज founded and who was mainly associated with it? Answer, founded in 1867 by Atmaram Pandurang, Mahadev Govind Ranade was mainly associated with it. 10. बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया और यह कहाँ स्थित है? Who built the Brihadeshwara temple and where is it located? Answer, Raja Raja Chola I, located in Thanjavur, Tamil Nadu. 11. दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में क्या अंतर है? What is the difference between southwest monsoon and northeast monsoon? Answer, southwest monsoon is the May monsoon June to September, northeast monsoon is the retreating post-monsoon October to November, brings rain to Tamil Nadu. 12. वुलर झील, लोनार झील और चिल्का झील किस किस प्रकार की झीलें हैं? What types of lakes are Wular Lake, Lonar Lake, and Chilka Lake? Answer, Wular Lake Tectonic Lake, Lonar Lake Crater Lake, Chilka Lake Coastal Lake. 13. 2011 की जनगणना के रजिस्ट्रार कौन थे? Who was the registrar of the 2011 census? Answer, C. चंद्रमुली. 14. असम में सर्वाधिक वर्षा होती है या मेघालय में और क्यों? Does Assam or Meghalaya receive maximum rainfall and why? Answer, Meghalaya receives the world's highest rainfall at Mawzinram and Cherrapunji. Among listed states Assam receives maximum rainfall. 15. ATP का उत्पादन कहाँ होता है और किस चक्र द्वारा? Where is ATP produced and through which cycle? Answer, in mitochondria, through the Krebs cycle when glucose combines with oxygen. 16. आधुनिकीकरण का सही संकेत क्या है? What is the correct indicator of modernization? Answer, adoption of new technology to increase production, not merely large-scale use of old techniques. 17. ठुमरी से कौन कौन से प्रमुख कलाकार जुड़े हैं? Which major artists are associated with ठुमरी? Answer, गिरजा देवी Queen of ठुमरी बेगम अख्तर, and उस्ताद चन्नूलाल मिश्रा. 18. बिहू के 3 रूपों की विशेषताएं क्या हैं? What are the characteristics of the 3 forms of Bihu? Answer, Rongali Bohag Bihu New Year April Kongali Kati Bihu No Celebration October Bhogli Magh Bihu Harvest Festival January. 19. मृणालिनी साराभाई ने कौन सी संस्था की स्थापना की? Which institution did Mrinalini Sarabhai establish? Answer, Darpana Academy of Performing Arts. 20.
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे? How many IITs were established during India's first 5-year plan 1951-56? Answer: 5 IITs were established. 21. भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 इस्पात संयंत्र किन देशों की सहायता से बने? With whose help were the 3 steel plants established during India's second 5-year plan built? Answer: भिलाई, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, रोरकेला, वेस्ट जर्मनी, दुर्गापुर, यूनाइटेड किंगडम. 22. विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? In which field is Vikram Sarabhai known for his contribution? Answer: space science. He is the father of India's space program and founded ISRO. 23. पटाखों में बारूद का रासायनिक नाम क्या है? What is the chemical name of gunpowder used in firecrackers? Answer: it is a mixture of potassium nitrate KNO3 sulfur S and charcoal C. 24. ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज के दहन का समीकरण क्या है? What is the equation for the combustion of glucose with oxygen? Answer: CH2O6-6O6-6 energy ATP. 25. एलपीजी सुधारों के तहत भारत ने क्या बदलाव किए? What changes did India make under LPG reforms? Answer: liberalization removed license Raj, privatization opened sectors to private players, globalization opened economy to foreign investment and trade. 26. हैदराबाद ने ब्रिटिश सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? In which year did Hyderabad sign the subsidiary alliance with the British? Answer: 1798 under निजाम अली खान. 27. कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? What was the capital of the Kadamba dynasty? Answer: बनावसी in present day Karnataka. 28. वासुदेव बलवंत फड़के को किस नाम से जाना जाता है? By what name is Vasudev Balwant Phadke known? Answer: he is known as one of the first revolutionaries to organize armed rebellion against British rule in Maharashtra. 29. भारत में पानी के स्रोतों का वितरण क्या है? What is the distribution of water sources in India? Answer: about 2.7% is freshwater rivers, lakes, glaciers, remaining is in oceans and seas is salt water. 30. तालीकोटा के युद्ध का क्या महत्व था? What was the significance of the Battle of Talikota? Answer: it was fought in 1575 between the Mughal Empire and Bengal Sultanate. It led to the downfall of the Vijayanagara Empire. 31. दिलीप ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं और यह किस प्रारूप में खेली जाती है? How many teams participate in the Dilip Trophy and in what format is it played? Answer: it is a domestic first-class cricket competition played between regional zones of India. 32. भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? In which state does the monsoon first enter India? Answer: केरला. 33. ATP का पूर्ण रूप क्या है और यह किसके लिए आवश्यक है? What is the full form of ATP and what is it essential for? Answer: adenosine triphosphate, essential for providing energy to cells for all biological processes. 34. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है और क्यों? What is mitochondria called and why? Answer: called the powerhouse of the cell, because it produces energy ATP through cellular respiration. 35. प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में क्या अंतर है? What is the difference between प्रार्थना समाज and ब्रह्मो समाज? Answer: ब्रह्मो समाज, founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828 in Bengal. प्रार्थना समाज, founded by Atmaram Pandarang in 1867 in Maharashtra. 36. चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या विशेषता थी? What was the specialty of the Chola Empire's administrative system? Answer: well-organized village administration, sabha and a naval power, an efficient taxation system including weighty forced labor tax. 37. भारत में LIF liquidity adjustment facility क्या है? What is LIF liquidity adjustment facility in India? Answer: a monetary policy tool used by RBI to regulate liquidity in the banking system through repo rate and reverse repo rate. 38. मेघालय के मावसिनराम और चेरापूंजी में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है?
Why does Mauzineram and Cherrapunji in Meghalaya receive such high rainfall? Answer: due to their location on the windward side of the Khasi Hills, which force moisture-laden winds to rise and cause orographic rainfall. 39. भारत में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? What is disinvestment in India and what is its purpose? Answer: process of selling government stake in PSUs to generate funds for development. Proceeds go to the National Investment Fund. 40. पंडवानी संगीत शैली किस राज्य से संबंधित है? Which state is the Pandwani music style associated with? Answer: Chhattisgarh. Tijanbai is its most famous exponent who received Padma Vibhushan in 2019. The 2nd of August 2026 Current Affairs. 1. ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर के प्रयास के साथ एम. श्रीशंकर ने रजत पदक जीता. M. Srishankar won the silver medal in the men's long jump event at the Glasgow 2026 Commonwealth Games with an effort of 8.09 meters. 2. 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में 10.71 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीता. Dilip Gavit clinched the gold medal in the men's 100 T47 sprint event at the 2026 Commonwealth Games with a games record time of 10.71 seconds. 3. हाल ही में चर्चित पुस्तक द न्यू मी 2.0 के लेखक गगन धवन हैं. Gagan Dhawan is the author of the recently discussed book The New Me 2.0. 4. सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के विरुद्ध कार्रवाई मजबूत करने के लिए संसद ने 2026 में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया. Parliament passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to strengthen action against paper leaks and unfair means in public examinations. 5. पश्चिम बंगाल का पहला समर्पित एनआईए पुलिस स्टेशन न्यू टाउन, कोलकाता में स्थापित किया गया. West Bengal's first dedicated near police station was established in New Town, कोलकाता. 6. बायोफार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए कम ऊर्जा वाली तकनीक बिट्स पिलानी, हैदराबाद परिसर ने विकसित की. बिट्स पिलानी, Hyderabad campus developed a low-energy technology for treating and reusing biopharmaceutical wastewater. 7. भारत के पहले त्रिसेवा पुनर्तः महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान का नाम समुद्र प्रदक्षिणा है. India's first all-female, tri-service circumnavigation sailing expedition is named Samudra Pradikshin. 8. अपना 21वां पदक जीतकर दक्षिण अफ्रीका के चैड ले क्लोज राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने. Chad Le Clos of South Africa became the most decorated athlete in Commonwealth Games history after winning his 21st medal. 9. 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों टीम फाइनल में भारत ने मलेशिया को हराया. India defeated Malaysia in both the men's and women's team finals of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championships. 10. हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल बंटवारा विवाद मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच है. The Mahanadi water sharing dispute is primarily between Odisha and Chhattisgarh. 11. चर्चित पुस्तक Heartland Rising, The Making of Majoritarian India के लेखक जावेद गया हैं. Javed Gaya is the author of the acclaimed book Heartland Rising, The Making of Majoritarian India. 12. भारत की हॉकी टीम ने विश्व कप से पहले अपनी जर्सी का रंग नीले से बदलकर केसरिया कर दिया. The Indian hockey team switched its jersey color from blue to saffron ahead of the World Cup. 13. CRPF ने हाल ही में अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया. The CRPF recently celebrated its 88th Raising Day. 14. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु शांति सेक्यूरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी ढांचा प्रस्तुत किया. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस. जयशंकर presented the Shanti Securing Holistic Advancement Through Norms, Trust and Integrity Framework for Maritime Security Cooperation in the Bay of Bengal region. 15. हाल ही में समाचारों में देखा गया क्यूशु द्वीप जापान में स्थित है.
Kyushu Island, recently seen in the news, is located in Japan. Previous question answer. India ranked 176th out of 177 countries in the 2026 Environmental Performance Index AP. Which country ranked first? Answer: C. Estonia. In the 2026 Environmental Performance Index AP, Estonia secured the first rank with a score of 74.79. India ranked 176th out of 177 countries with a score of 22.46, making it the second lowest ranked country after Laos. India has remained among the 5 worst performing countries in the AP since 2022. Question of day. Which scheme was recently approved by the Union Cabinet to promote floating solar power projects in India? A. PM Kusum Yojana. B. PM Surya Ghar Yojana. C. PM Surya Sarovar Yojana. D. National Solar Mission Phase 3. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.